तालियों के गूंज से स्वागत करें रकुल प्रीत सिंह का. As our host said, she really is the lady of the moment, the prettiest and busiest in B-Town. So firstly, कैसा लगता है जब मैं वो कहता हूँ आपको कि prettiest and busiest actress of today? Thank you so much. That's very, very, very kind of you. Good afternoon, everyone. बहुत अच्छा लगता है. Of course, responsibility और बढ़ जाती है जब busiest बोलते हैं. But you're being too sweet. Thank you so much. और मैं ये बता दूं कि वो इतनी खूबसूरत और fresh लग रही हैं, मगर ये अभी शूट करके ही आई हैं. So whoever thinks acting is a easy job, मैं बता दूं she has just shot 11 hours underwater. पर फिर भी आप इतने फ्रेश और खूबसूरत लग रही हैं. थैंक यू. ट्रस्ट मी, वो 11 घंटे के बाद जो अगला दिन था बिल्कुल ऐसा नहीं था. बट वो कैसा अनुभव था? बहुत रेयर है, बहुत अलग कहानी है, वो भी बहुत अलग फिल्म है. 11 घंटे शूट करना इज नॉट इजी. आई वाज इन वाटर. हम लोग एक अंडर वाटर सीक्वेंस शूट कर रहे थे फ्रॉम 2 in the afternoon to 2 at night. तो 2:30 आई वेंट इनटू वाटर. और ऐसा नहीं है कि आप शॉट के बाद बाहर आ सकते हैं. आप बिकॉज यू नो आप नहीं आ सकते, आपका दूसरा शॉट सेटअप हो रहा है या एनीवेज यू नॉट गोना ड्राई अप. तो 2 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक मैं पानी में थी. फिर कॉस्ट्यूम चेंज था और फिर 8 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक. सो ट्रस्ट मी, नेक्स्ट डे माई बॉडी वॉज हर्टिंग. उस टाइम आपको नहीं लगता, उस टाइम तो यू आर इंजॉइंग द शूट एंड इट्स द पैशन दैट कीप्स यू गोइंग. बट नेक्स्ट डे आई हैड बॉडी पेन्स एंड शिवर्स एंड ट्रस्ट मी एट 7 AM मैंने जितने महसूस मुझे पता थे सबको मैसेज कर दिया कि प्लीज़ जो आ सकता है प्लीज़ आ जाओ. सो इट टुक मी अ डे टू रिकवर विच वॉज येस्टरडे. Yeah. And today, of course, you're up and rearing to go as always. Yes. मगर मैं आपसे अब पूछूंगा इस साल के बारे में, क्योंकि अब साल का अंत हो रहा है. नए साल की बातें तो करेंगे ही, मगर 2022 की अगर बात करें तो आपकी 5 रिलीजेस इस साल में आई हैं. 5 रिलीजेस in 1 year, that too after COVID. बहुत बड़ी बात है ये. तो मैं पहले तो पूछना चाहूँगा, डिड यू एक्सपेक्ट कि इतने सारे रिलीजेस आपकी एक साल में आएंगी? आई नो इट्स नॉट अप टू एक्टर्स, लॉट ऑफ टाइम्स रिलीज डेट्स इज डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर, मगर इस साल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? और द फैक्ट दैट यू हैड 5 रिलीजेस इन अ ईयर, बिग डील. I'm very grateful. I can't say anything beyond that. You know, this is my dream. I always wanted to be an actor, and very, very grateful that I've gotten the opportunity कि मुझे ये फिल्में करने का मौका मिला, मुझे audiences से प्यार मिला, because I don't think without the love of the audiences you can really survive. So I am very grateful that the industry also supported me, the audiences supported, I got these opportunities. And जब मैंने ये फिल्में साइन की थी, कुछ प्री पैंडेमिक थी, कुछ थ्रू द पैंडेमिक थी. ऐसा नहीं मालूम था कि सब एक साल में 5 रिलीजेस आ जाएंगे. बट नेवरदलेस आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ऑल ऑफ देम आर सो डिफरेंट. रनवे बहुत ही अलग फिल्म है डॉक्टर जी से, और फिर कठपुतली बहुत अलग फिल्म है, यू नो, थैंक गॉड से. सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट पीपल गेट टू सी अ वैरायटी, दे गेट टू सी माई वर्सेटैलिटी. एंड मैं सिर्फ ये होप करती हूँ कि मुझे हर साल इसी तरह अच्छी अच्छी फिल्में मिलते रहें. एंड आई कीप वर्किंग. हर फिल्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं. पहले तो रनवे 34 के बारे में बात करेंगे. अजय देवगन के साथ आपने रियूनाइट किया ऑलरेडी. दे दे प्यार दे बहुत बड़ी हिट रह चुकी है. उनके अंडर आपने यू वर्कड एज हिम एज अ डायरेक्टर. वो भी बड़ा रेयर अपॉर्चुनिटी है. और बच्चन साहब भी थे उस फिल्म में. तो रनवे 34 के बारे में क्या कहेंगे लुकिंग बैक नाउ? कैसी जर्नी रही? और अब ऑडियंस का रिस्पॉन्स इतना फिनोमिनल रहा. अभी भी जब हम होल्डिंग एरिया में, यू आर गेटिंग प्रेज फॉर दैट. या यू नो, एक्चुअली आई थिंक रनवे विल ऑलवेज बी वेरी वेरी स्पेशल टू मी, बिकॉज एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था रनवे शूट करने के लिए. फॉर एवरीवन हु सीन द फिल्म हियर, दे वुड नो दैट जब हम टर्ब्यूलेंस दिखा रहे हैं या जब हम प्लेन का ऑल्टीट्यूड गिर रहा है, ये सब दिखा रहे हैं. सो वी वर शूटिंग ऑन हाइड्रोलिक्स एंड इट्स नॉट ईजी टू गेट दैट. एंड वी वर शूटिंग इन अ रियल सिम्युलेटर. तो जो कॉकपिट आप देख रहे हैं उसके सामने जो स्क्रीन है और जो वो है, वो रियल सिम्युलेटर का साइज़ है. तो उस साइज़ में 2 एक्टर्स और साथ में कैमरास. एंड स्टिल एज अ डायरेक्टर आई थिंक अजय सर वाज सो गुड. देयर वर 7 कैमरास. You know, so Asim sir, who's our cinematographer, and Ajay sir, I think they did a fantastic job. That they knew कि इस तरह का अगर आपको expression
शूट करना है, so everything has to be taken together. You can't keep recreating turbulence, you can't recreate panic. So it was a very different experience. जब आपको ऐसा बोला जाए कि आपका altitude गिर रहा है, आपसे कुछ 10,000 फीट गिर गया है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सीन नहीं है, लाइनें नहीं है. So for me it's very special because it was a very different experience, and the kind of love and credibility we've all got for Runway, and especially after it came on OTT, people have showered us with so much love. I'm very grateful for that opportunity. पर अजय देवगन के संग काम करने का अनुभव कैसा रहा? हाउ इज ही ऑन सेट्स? इस साल के बेस्ट एक्टर हैं, नेशनल अवार्ड भी उनको इसी साल मिला है तानाजी के लिए. Absolutely, I think it's a delight to work with Ajay sir. I remember जब दे दे प्यार दे हम शूट कर रहे थे, वो बहुत ही अलग फिल्म है, उसका जो वो रोम कॉम स्पेस में है. एंड ऑल आई कैन से इज दैट जब रनवे हम शूट कर रहे थे, सर was 95% of the times he was a director. Suddenly he would switch and he's an actor, but it's just amazing to see how he can be so focused and channel his energy on the shot, because it's a very difficult film to shoot. It's not an easy film. So it was a great experience to see that, the focus, the calm at the same time, in stress situations as well. And Runway gave me the opportunity to work with Amit ji. I think जब आप एक्टर बनते हैं तो आपका एक सपना होता है कि अमिताभ बच्चन को देख लें, फिर होता है कि अमित सर को मिल लें, फिर होता है उनके साथ काम कर ले. So I'm so glad that I got an opportunity to work with Amit ji, and he's amazing. And full marks to her. Outsider हैं, from outside the film industry, और अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुकी हैं ये at such a young age. So दोबारा तालियां इनके लिए. अब हम thank God, I know there's a lot to thank God this year. This year I've only been saying thank God. मगर आपकी पिक्चर भी अभी आई और वो भी दिवाली रिलीज थी. तो फेस्टिव मंथ पे हम देखते थे सलमान खान की फिल्म आती थी, शाहरुख खान की फिल्में आई हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड टाइम टू रिलीज द फिल्म. और अब आपकी भी फिल्म आई है. सो थैंक गॉड का अनुभव कैसा रहा, रिस्पॉन्स कैसा रहा? एंड यू वर्किंग फ्रॉम मिस्टर बच्चन एंड अजय देवगन टू द कंटेम्प्रेरीज एज वेल, लाइक सिद्धार्थ इन थैंक गॉड एंड ऑल्सो आयुष्मान डॉक्टर जी में हाल ही में भी. यस नो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा एक्चुअली. मोर आई थिंक बिकॉज राइट नाउ द रिस्पॉन्स इज delayed sometimes, जैसे ही फिल्म आपकी, क्योंकि ये OTT स्पेस इज अ न्यू स्पेस, तो जब थिएटर में फिल्म आती है तब आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है, ऑडियंसेस जो देखते हैं उनका रिस्पॉन्स मिलता है, एंड इट कीप्स गोइंग ऑन बिकॉज आफ्टर अ फ्यू वीक्स इट कम्स इन OTT. ट्रस्ट मी, जैसे हम अभी आपने डॉक्टर जी की बात की, एक हफ्ते पहले डॉक्टर जी रिलीज़ हुई और तब से आई हैव बीन गेटिंग मैसेजेस. आई सॉ सम मैसेजेस ऑन माई सोशल मीडिया वेयर एक्चुअली I'd like to highlight this, that somebody said thank you for making this film. For the first time I could speak to my husband openly. एंड अगर आपकी फिल्म किसी की लाइफ में इतना इम्पैक्ट कर जाए तो I think that's the best thing, it's such a relevant topic. So I think the praise keeps going on thanks to the OTT, and it's a continuous process, and even Thank God has just come on Prime. So today we got a message we got so emotional. It talks about parents and it talks about the bonds that you share, what truly matters in life. So I think for me it's just again thank God and grateful situation. मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा कि आपका बॉन्ड कैसा है आपके पेरेंट्स के संग in real life? It's amazing. We are privileged to have them today with us. Yes, they're here today. Mom and dad are here today, and I'm so glad that this is the first time they're watching me live on a conclave. Actually, possibly watching a live interview. I don't think they've seen. पहली बार आज इतिहास हो रहा है इंडिया न्यूज़ मंच के माध्यम से कि पहली बार रकुल प्रीत's parents are seeing her live in any interview. Yeah, because I do remember, I'd like to share this, that when you're kids, you're always, वो पेरेंट्स के सामने आपको शर्म आती है या आपको डर लगता है. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इवन आफ्टर आई बिकेम एन एक्टर, आई यूज्ड टू बी वेरी शाय कि 100 लोग बैठे हो सकते हैं. इफ माई डैड इज सिटिंग देयर, आई माइट जस्ट गेट नर्वस because he will correct me later saying you could have said this differently, and I would be very nervous. So today actually this is my testing ground as well. I'm not nervous. Fantastic. So you've beaten that fear as well. Yeah, but you spoke about the bond, and I'd just like to say that I think I'm very blessed to have the parents that I have. And people talk about my journey, and I don't think it could have been possible without the support that my parents have given. And it's not just emotional support. It's
it's not just saying yeah beta jao जी लो अपनी जिंदगी. It's support at every point, you know, whether it's emotional, whether it's strength, whether it's standing by me in times that they need to, whether it's helping me with so many other things to do with my, you know, my accounts and things like that. Every basic thing, even scripts. Sometimes when I'm confused, I run my scripts by my father and say कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ के बताओ. So I think for every parent out there, you know, to support their child's dreams and help them walk through that path, I'm very blessed. तो हर माँ बाप जो ये इंटरव्यू सुन रहा है, प्लीज डू सपोर्ट एंड Please do एनकरेज योर support your kids. जी ज़रूरी होता है. और टुमारो यू नेवर नो, दे कैन ऑफ कोर्स आल्सो बी लाइक रकुल. मगर मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये सारे जो रोल्स आप एंड वी कैन स्पेंड द होल डे टॉकिंग अबाउट योर ईयर, सो आई एम गोइंग टू मूव ऑन बिकॉज शी इज आल्सो एट अटैक, sweet. कठपुतली, बहुत अलग रोल्स भी हैं और आप हर रोल में फिट आ गई हैं बड़ी खूबसूरती से. तो ये क्या कॉन्शियस एफर्ट था कि यू टेकन वेरी वेरिड रोल्स, यू नो, डॉक्टर से लेके टीचर से लेके पायलट से लेके कॉप? You know, I think this is a thought in my head. मेरे दिमाग में मतलब एक conscious thought है कि I want to be versatile. I want to show the world that if I can be an Aisha of दे दे प्यार दे, that is a romantic space जिसको नाच गाना पसंद है, then I can also be a Tanya Albuquerque of Runway. So that is a thought, but then I'm also lucky that these scripts came to me, because you might say whatever, but you choose from what you get. So I think somewhere I gave it out in the universe and different kinds of scripts came to me. तो कोशिश यही रहेगी कि मेरी हर फिल्म मेरी पिछली फिल्म से अलग हो और कुछ नया करने को मिले, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो waking up and going to set has to be exciting. I don't want to be repetitive, but yes, I want to do all kinds of films में नाच गाना भी, मसाला भी, and hard hitting cinema. और हम ये भी देख रहे हैं कि आप पैरेलली साउथ एंड नॉर्थ भी स्ट्रैडल कर रही हैं वेरी इजीली. यू नो, आप काम कर चुकी हैं अल्लू अर्जुन के संग, जूनियर एनटीआर के संग, बहुत बड़े नाम है ये साउथ के. तो ये अनुभव कैसा है टू बैलेंस बोथ इंडस्ट्रीज, और साउथ में इन बड़े हीरोज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज आई नो इट्स you've done it a while back, मगर अब बहुत से ऑडियंसेस अब उनको डिस्कवर कर रहे हैं. Actually, absolutely. You know, बहुत सारे audiences, actually, a lot of people watch those films on television. लेकिन thanks to owing to the pandemic and OTT space again, a lot of people got got to see the cinema from the south, और यहाँ पर भी फिर releases होने लग गए. But my journey began there, and I can say that I'm extremely grateful again, क्योंकि आपकी जो मेंटल कंडीशनिंग होती है शुरू के 4-5 साल में हो जाती है ऑफ योर करियर, ऑफ हाउ यू आर एज अ पर्सन, हाउ सीरियसली यू टेक योर जॉब, एंड द वर्क एथिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन everywhere now, but even in the south. So yeah, and my experience has been great. So today when people talk about Pushpa, so I've worked with the director of Pushpa, Sukumar sir, I've worked with Allu Arjun or with NTR. So I'm like, I've worked with these people and I feel so proud that they're getting that national recognition, because they've always been stars, and I'm glad that I got a chance to work with them. चलिए, आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि आज सुबह स्पोर्ट्स मंत्री भी आए हुए थे यहाँ इस मंच में, तो उन्होंने स्पोर्ट्स की भी काफ़ी बातें करें और आप भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रही हैं. आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो, आई एम श्योर द टेनिस फैंस ओवर हियर विल नो कि रकुल इज आल्सो द कोन ऑफ टेनिस टीम इन द टेनिस प्रीमियर लीग, हैदराबाद की जो टीम है, और अभी हाल ही में आपने वहाँ भी second year we won the trophy. Fantastic. Second year, wow. Yeah. What was your first reaction for that? Very happy. Of course, there was a lot of pressure because सब लोग पूछ रहे थे कि you're the last year champions. How is it going to be? But this is the second year, and I'm very very happy that that's happened. I'm glad, and I just feel that sport should be given a lot of importance, because आपकी जो एक तरह से the way you handle situations, the way your mental conditioning turns out to be if you've been a part of some sport. I used to be in sports thanks to army background. It's very important again. So that's my love for sports, and yeah. And finally, we can't not ask her कि New Year plans क्या है? A lot of people look for your Instagram for holiday plans and so New Year then plans. wait for my Instagram. अभी reveal कर दिए तो Instagram कौन देखेगा? अच्छा, चलिए. मगर 2023 excited for that, for the New Year? Absolutely, absolutely excited for 2023. I have 3 films that are ready, that would release for sure in the next year, and looking forward to doing some great work. We wish you all the very best, और उम्मीद करते हैं कि हर साल इस साल की तरह आपके लिए हो, full of releases, full of love from fans, full of appreciation, and
आप हमारे मंच पे आते रहें. Thank you so much, Uday. This was very, very, very sweet of you and very kind words. Thank you for taking time. Once again, let's hear it for Rakul Preet Singh, the prettiest and busiest actor in Bollywood today. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग Thank you so आज much. जुड़ने के लिए. Thank you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.